A very good morning, guys. I hope I'm audible now. Everything is fine, isn't it? Good morning. So, on the previous link, the mic was not working. There is some issue. I tried, but the things didn't went well. Good morning, Vikram, Ambika. Ambika, you have joined us newly. Goliator Harrison, Aarti, I can see. Weber, good morning. Saloni, nice to see you all, guys. Being it a Sunday, we are there. That's a big thing, है ना? You must pat your back, right? मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है, मेरी आवाज़ बैठ गई है. अच्छा, इट्स 19th डे. ओके ओके, इट्स गुड अंबिका. वो कभी कभी ना नेम नोटिस में नहीं आता. जो लोग बहुत ज़्यादा बकवास करते रहते हैं ना, मैसेजेस करते रहते हैं, बस वही नोटिस में आ पाते हैं. बट इट्स नाइस, गुड टू सी यू देयर. ओके, चलो. सो आई बिलीव यू ऑल आर वेरी गुड और यू ऑल हैव योर ग्लासेस ऑफ वाटर. अमाउंट बढ़ा रहे हो, मुझे हर रोज़ तुम्हें याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग तो पीना डिच करते हैं और कुछ लोग जो पीते हैं वो ठीक है पी लिया करके हो गया करके, दे आर नॉट इंक्रीजिंग देयर वॉल्यूम. बढ़ा रहे हो या नहीं बढ़ा रहे हो? टेल मी. दिस इज माई सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर. मैं ये दूसरा ग्लास का पानी तुम लोगों के साथ लेके बैठी हूँ कि कोशिश करूंगी तो थोड़ा थोड़ा करके ये भी अंदर जाएगा, राइट? सो आर यू डूइंग द सेम? कोई बात नहीं, यू पीपल कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप. वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हो. एक ही क्लास हुआ है अभी तक, कोशिश करो थोड़ा और बढ़ाने की, है ना? देखो, हमें क्या करना है, अपने कल वाले दिन से थोड़ा ज़्यादा करना है, दैट्स इट. ठीक है? कल वाले दिन से आई एम नॉट सेइंग कि 2 ग्लास पियो कि 3 ग्लास पियो. मैं बस इतना कह रही हूँ कि कल वाले से थोड़ा सा ज़्यादा पियो, इतना सा ज़्यादा. दैट्स इट. ओके. विक्रम ने होमवर्क भेजा है. नॉट येट. सी कहाँ भेजा है? मेटलर्जी सेशन वी विल टेक ऑन मंडे. मंडे को दोपहर में 3:45 पे हो जाएगी क्लास शेड्यूल, अगर नहीं हुई है तो. टेलीग्राम पे ओके. अभी मैंने टेलीग्राम पे देखा नहीं है. आई विल विजिट एंड आई विल सी. ओके, चलो. टुडे वी हैव कंप्लीटेड विद आवर सेकेंड वीक, सो वी मस्ट नो कि हमने अपने टारगेट्स को कितना पूरा किया. ठीक है? तुम लोग जल्दी से टेक योर टाइम एंड राइट इट डाउन. अपने अपने डायरीज में अपना खोलो, अपना शेड्यूल खोलो और मेंशन करो तुम्हारे टारगेट्स में क्या क्या कंप्लीट हो गया और क्या क्या रहता है. ठीक है? चलो स्टार्ट राइटिंग. मतलब वट द थिंग्स, पहले तो तुमने जो वीक शुरू होते में लिखा था टारगेट, उसी वीक पर जाकर चेक करो कि क्या क्या हो गया और क्या क्या रहता है. लिखो जल्दी से. स्टार्ट डूइंग.
written. Okay. Now you can tell me कि हमने जो अपना रिवीजन शेड्यूल बनाया था उस रिवीजन शेड्यूल के अकॉर्डिंग व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू पिक इन दिस पर्टिकुलर वीक. विल यू टेल मी? मैंने आपका एक रिवीजन शेड्यूल बनाया था. उस रिवीजन शेड्यूल के अकॉर्डिंग व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू आर गोइंग टू पिक इन दिस पर्टिकुलर वीक. More concept work, energy, power limits, continuity, completed, geometry, periodicity, ongoing. ठीक है, मतलब 3 चैप्टर्स पूरे हुए. हाँ जी. तो दिस वीक हैज गिवन यू द completion of 3 chapters, right, Vaibhav? Good. Now target the other topics. 2 are already ongoing. 3 topics you can pick new ones, है ना. 3 नए टॉपिक पिक कर सकते हो और 2 टॉपिक जो चल रहे हैं उनको फिनिश करेंगे नेक्स्ट वीक में, है ना. चलो, ट्राई इट आउट. ओवरलोड नहीं लेना है ना. ओवरडू नहीं करना है. ओनली द 3 न्यू टॉपिक्स जो तुम्हें लगता है तुम्हारे अन अकेडमी पे शुरू होने वाले हैं या तुम लोग खुद से शुरू करने वाले हो. यू आर गोइंग टू डू सेल्फ स्टडी ऑफ देम. तो जो भी तुम्हें लगता है डू दैट वे. उस अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल में लिखो. वीकली टारगेट्स बनाना इज द अटमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इस हफ्ते में तुम्हें क्या क्या करना है. अगर इस हफ्ते में कुछ ऐसा आ रहा है जहाँ पे तुम्हारा टाइम अलग से खर्च होना है वो भी मेंशन करोगे. जैसे कि इफ़ इट इज़ एनीथिंग, तुम्हें कहीं जाना है या कुछ भी है, फिर इवैल्यूएट करोगे उसको जाना कितना वर्थ है. अगर है तो यू गो, अदरवाइज नहीं. तो वो सब चीज़ें भी तुम्हारी प्लानिंग में होनी चाहिए. दे मस्ट बी इन योर शेड्यूल्स. Aman, we have to prepare our weekly targets and then we have to work on the daily targets. अगर हमारे पास वीकली टारगेट नहीं होगा ना तो हम अपने डेली टारगेट्स में भटकते रहेंगे. वी विल हम्बल हेयर एंड देयर. पता है तुम्हें, लगेगा ये कर लेता हूँ, अगले दिन लगेगा ये कर लेता हूँ और तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि कुछ पूरा भी हुआ या नहीं हुआ. यू विल नॉट एंड अप डूइंग एनीथिंग. तो इसलिए वीकली टारगेट्स बहुत ज़रूरी है ताकि तुम्हें वीक में पता होगा अच्छा मुझे बस इन्हीं 4-5 चैप्टर्स के आगे पीछे ही घूमना है. तो डिस्ट्रैक्शन ही नहीं होगा. बिल्कुल खेल सकते हो विक्रम. मैंने बोला ना, इफ़ यू वांट टू डू एनी ऑफ द सच थिंग सो जस्ट मेंशन इट इन योर शेड्यूल. आप उसको बैलेंस आउट कर सकते हो बहुत इजीली. ओके. वीकली टारगेट्स बनाना, वो सॉरी, हर दिन डेली टारगेट्स बनाना इज जस्ट अ 2 मिनट्स जॉब. तुम्हें कुछ करना थोड़ी है उसमें. हमें लंबे लंबे टाइम टेबल्स बना के हर रोज फाड़ने नहीं है जो बच्चे करते हैं. इतने बजे उठूंगा, इतने बजे खाऊंगा, इतने बजे पढ़ूंगा. अरे नो, वी हैव टू स्टडी फॉर टारगेट्स. वी डोंट हैव टू स्टडी फॉर टाइम. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. हमें अपने टारगेट्स के लिए पढ़ना है और अगर हम अपना टारगेट अगर जल्दी पूरा कर लेते हैं तो वी आर अलाउड टू प्ले फुटबॉल और वी आर अलाउड टू प्ले वट एवर यू वॉन्ट टू. मतलब जो तुम्हें खेलना है, जिससे तुम्हें रिलैक्स फील होता है, तुम्हें उसे खेलने में भी मजा आएगा बिकॉज यू आर डन विद योर टारगेट. समझ रहे हो. और तुम्हें ये भी कॉन्फिडेंस आएगा अगर मैंने ये टारगेट पूरा कर लिया एंड आई कैन प्ले, तो वाई कैंट आई कंप्लीट माई टारगेट द अदर डे. तो एक कॉन्फिडेंस आएगा या आई कैन कंप्लीट इट. मेक इट. Okay.
Now here I want to have a reading of one thing. I will have a reading of one thing. If you're interested, then please do join me for the next 10-15 minutes. It's Sunday, so yeah, definitely we must give time to this. How to design your environment for success. So for today, the topic is, what's the topic is? इस टॉपिक पे मैं तुमसे पिछले एक हफ्ते से बात कर रही हूँ एंड आई एम आस्किंग यू टू वर्क ऑन योर एनवायरनमेंट. ठीक है, मुझे लगता है सब लोगों ने किया भी है. सो ऑन दिस आई वॉन्ट टू हैव अ रीड फॉर यू. हाउ टू डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस. During the energy crisis and the oil embargo of the 1970s, Dutch researchers began to pay close attention to the country's energy usage. In one suburb near Amsterdam, they found that some homeowners use 30% less energy than their neighbors. Despite the homes being of similar size and getting electricity for the same price. Okay, I hope I'm audible to all of you. It turned out the houses in this neighborhood were nearly identical except for one feature: the location of the electrical meter. Some had one in the basement, other had the electrical meter upstairs in the main hallway. As you may guess, the homes with the meters located in the main hallway used less electricity. When their energy use was obvious and easy to track, people changed their behavior. Every habit is initiated by a cue. We are more likely to notice cues that stand out. Unfortunately, the environments where we live and work often make it easy not to do certain actions because there is no obvious cue to trigger the behavior. It's easy not to practice the guitar when it's tucked away in the closet. It's easy not to read a book when the bookshelf is in the corner of the guest room. It's easy not to take your vitamins when they are out of sight in the pantry. When the cues that spark a habit are subtle or hidden, they are easy to ignore. By comparison, creating obvious visual cues can draw your attention towards a desired habit. In the early 1990s, the cleaning staff at Schiphol Airport in Amsterdam installed a small sticker that looked like a fly near the center of each urinal. Apparently, when men stepped up to the urinals, they aimed for what they thought was a bug. The stickers improved their aim and significantly reduced spillage around the urinals. Further analysis determined that the stickers cut bathroom cleaning costs by 8% per year. Further analysis determined that the stickers cut bathroom cleaning cost by 8% per year. मतलब उस छोटे से स्टीकर ने क्योंकि लोगों का टेंशन वहाँ पे सीक कर दिया जिसकी वजह से उसका क्लीनिंग कॉस्ट 8% से कम हो गया. I have experienced the power of obvious cues in my own life. I used to buy apples from the store, put them in the crisper in the bottom of the put them in the crisper in the bottom of the refrigerator and forget all about them. By the time I remembered that the apples would have gone bad. I never saw them, so I never ate them. I think we all know this. This all happens with us in everyday life. We bring the things, we keep them in the cupboard, we keep them in the refrigerator, and we forget about them, and they got rotten or something, and we never ate them. Eventually, I took my own advice and redesigned my environment. I bought a large display bowl and placed it in the middle of the kitchen counter.
The next time I bought apples, that was where they went. Out in the open where I could see them. Almost like magic, I began eating a few apples each day simply because they were obvious rather than out of sight. Here are a few ways you can redesign your environment and make the cues of your preferred habit more obvious. If you want to remember to take your medication each night, put your pill bottle directly next to the faucet on the bathroom counter. If you want to practice, are you getting? अगर आपको अपनी रात को दवाई लेनी है, put them in the counter of your bathroom. ठीक है? If you want to practice guitar more frequently, place your guitar stand in the middle of the living room. If you want to remember to send more thank you notes, keep a stack of stationery on your desk. If you want to drink more water, fill up a few water bottles each morning and place them in common locations around the house. If you want to make a habit a big part of your life, make the cue a big part of your environment. Make the cue a big part of your environment. The most persistent behaviors usually have multiple cues. Consider how many different ways a smoker could be prompted to pull out a cigarette. Driving the car, seeing a friend smoke, feeling stressed at work, and so on. The same strategy can be employed for good habits. By sprinkling triggers throughout your surroundings, you increase the odds that you will think about your habit throughout the day. Make sure the best choice is the most obvious one. Making a better decision is easy and natural when the cues for good habits are right in front of you. Making a better decision is easy but and natural when the cues for good habits are right in front of you. Environment design is powerful not only because it influences how we engage with the world, but also because we rarely do it. Most people live in a world others have created for them, but you can alter the spaces where you live and work to increase your exposure to positive cues and reduce your exposure to negative ones. Environment design allows you to take back control and become the architect of your life. Be the designer of your world and not merely the consumer of it. Are you interested to go beyond it? Are you interested to go beyond it? Yes. The context is the cue. The cues that trigger a habit can start out very specific, but over time, your habits become associated not with a single trigger, but with the entire context surrounding the behavior. The cues that trigger a habit can start out very specific, but over the time, your habits become associated not with a single trigger, but with the entire context surrounding the behavior. For example, many people drink more in social situations than they would ever drink alone. Right? Many people drink more in social situations than they would ever drink alone. The trigger is rarely a single cue, but rather the whole situation. Watching your friends order drinks, hearing the music at the bar, seeing the beers on tap, we mentally assign our habits to the locations in which they occur. The home, the office, the gym. Each location develops a connection to certain habits and routines. You establish a particular relationship with the objects on your desk, the items on your kitchen counter, the things in your bedroom. Our behavior is not defined by the objects in the environment but by our relationship to them. In fact, this is a useful way to think about the influence of the environment on your behavior. Stop thinking about your environment as filled with objects.
Start thinking about it as filled with relationships. Okay, that is the things around you, what impact they creates on you. Is this a positive impact or is this a negative impact? So double the positive impact and reduce the negative impacts. Think in terms of how you interact with the spaces around you. For one person, her couch is the place where she reads for an hour each night. For someone else, the couch is where he watches television and eats a bowl of ice cream after work. The couch is where, for someone else, for one person, the couch is the place where a person reads for an hour each night. But for the other person, the couch is where he watches television and eats a bowl of ice cream after work. Different people can have different memories and thus different habits associated with the same place. The good news, you can train yourself to link a particular habit with a particular context. In one study, scientists instructed insomniacs to get into bed not only when they were tired, insomniacs to get into bed not only when they are tired. If they couldn't fall asleep, they were told to sit in a different room until they became sleepy. Over time, subjects began to associate the context of their bed with the action of sleeping, and it became easier to quickly fall asleep when they climbed in bed. Their brains learned that sleeping, not browsing on their phones, not watching television, not staring at the clock was the only action that happened in that particular room. Are you getting it? If you will go to your bed, then you will be giving your clear instructions. Okay, this is for sleep, and as soon as you will go to your bed, you will fall asleep. इट्स जस्ट नॉट दैट कि जब तुम थकोगे, जब तुम्हें नींद आएगी तब तुम सोओगे. दिस इज अ वेरी बैड थिंग दैट वी डू कि जब नींद आएगी तब सोएंगे. देयर इज नो सच थिंग. द नींद मस्ट बी समथिंग यू हैव टू ट्रेन योर माइंड इन सच अ वे कि हम बेड पे गए तो हमें नींद आएगी. क्यों? बिकॉज इट इज़ मेंट फॉर दैट. अगर हम उसे उस तरह से ट्रेन करेंगे रादर देन ब्राउजिंग अ फोन और डूइंग दिस और हम्बलिंग हेयर एंड देयर, क्यों अभी नींद नहीं आ रही है करके. ओके, द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज आपका कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए व्हाट इट इज फॉर. द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो रिवील्स एन इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी. Habits can be easier to change in a new environment. It helps, listen it. I think Aman will be able to relate it very easily. The power of context also reveals an important strategy. Habits can be easier to change in a new environment. It helps to escape the subtle triggers and cues that nudge you towards your current habits. I think Weber, who sits in the library, will be able to understand the point. है ना? It helps to escape the subtle triggers and cues that nudge you towards your current habits. Go to a new place, a different coffee shop, a bench in the park, a corner of your room you seldom use, and create a new routine there. It is easier to associate a new habit with a new context than to build a new habit in the face of competing cues. जहाँ तुम ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो नई हैबिट्स डेवलप करने की या कुछ अच्छा करने की, उससे बेटर तुम्हारे लिए होता है व्हेन यू गेट अ न्यू प्लेस, न्यू सराउंडिंग्स. It can be difficult to go to bed early if you watch television in your bedroom each night. It can be difficult to go to bed early if you watch television in your bedroom each night. It can be hard to study in the living room without getting distracted if that's where you always play video games. जहाँ तुम हमेशा खेलते हो वहाँ पढ़ाई कैसे हो सकती है? But when you step outside your normal environment, you leave your behavioral biases behind. But when you step outside your normal environment, you leave your behavioral biases behind. You are not battling old environmental cues, which allows new habits to form without interruption. Let me give you an example. One of my niece came to my place. He was also preparing for your IIT JEE examination. When she was learning at her own house,
तो उसको बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते थे. रीज़न बीइंग आपके साथ और आपके स्पेस के साथ एक आपके ना कनेक्शंस बन जाते हैं. वो कनेक्शंस बन जाते हैं. सो व्हेन यू गो टू योर लिविंग रूम यू फील दैट वे. व्हेन यू कम टू योर रूम, क्या, द थिंग्स डजंट मैटर, द कनेक्शंस मैटर जो आपने उन चीज़ों के साथ बना लिए होते हैं. बट व्हेन शी केम टू माई प्लेस एंड शी वॉज स्टडिंग, शी वॉज लाइक क्यों, अब यहाँ पे उसका किसी भी चीज़ से कनेक्शन ही नहीं है. तो शी इज़ नॉट बाइज्ड. उसको कुछ दिखाई नहीं देता था. देर इज़ नथिंग टू डू, राइट. सो अ न्यू स्पेस, अ न्यू सराउंडिंग्स में आपको वो इंटरप्शंस खत्म हो जाते हैं. द थिंग्स दैट वर इंटरप्टिंग यू, कि यहाँ तो मैं ये करती थी, यहाँ तो ये होता था, दिस इज द टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, वो सब कट हो जाता है. सो न्यू एनवायरमेंट मतलब बैटलिंग विद द ओल्ड एनवायरमेंटल क्यूज allows new habits to form without any interruption. That's why जब हम घर से निकलते हैं, वी गो टू आवर कॉलेज लाइफ, वी गो टू आवर हॉस्टल्स, या कहीं भी हम कुछ नया डिफरेंट चेंज करते हैं. सो इट बिकम्स वेरी ग्रेजुअल एंड वेरी इजी टू डेवलप, है ना. इसीलिए आई एम सेइंग कि जो अमन अमन का जो रूटीन हुआ करता था, जो जो भी चीज़ें हुआ करती थी एट होम, व्हेन ही वाज देयर एट होम, वो सब बदल चुकी होंगी व्हेन ही हैज़ वेंट टू द हॉस्टल, राइट. बट इट डजंट मीन कि हम अपने आप को शिफ्ट ही करते रहेंगे, हम नई नई जगह नई लोकेशन ढूंढते रहेंगे, राइट. इज कंफर्ट जोन लिविंग विल गिव, नो, दैट इज नॉट कंफर्ट जोन लिविंग. इट जस्ट दैट, अब वही ना, जिस काउच पे एक बंदा बुक पढ़ रहा है, उस काउच पे दूसरा बंदा वीडियो गेम्स खेल रहा है. इट्स जस्ट अबाउट व्हाट कनेक्शन यू हैव बिल्ड विद दैट पर्टिकुलर काउच, राइट. तो अगर आपके कंफर्ट जोन के प्लेस में आपने किस तरह का रिलेशनशिप बिल्ड किया हुआ है, ये उस बात से फर्क पड़ता है. Okay, so that's why all the things that distracts you, so you have to create your space in such a way जो आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आए, आपको पॉजिटिव चीज़ों के लिए आपको मोटिवेट करे. जो भी चीज़ आपको किसी गलत चीज़ के लिए, आपके टाइम किलिंग के लिए आपको 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 करती है, आपको उसको अपने रूम से हटा देना है. इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर सराउंडिंग्स बिकॉज दे आर मोर पावरफुल. Environment is very very powerful, guys. So let me complete it. You are not battling old environmental cues, which allows new habits to form without interruption. Want to think more creatively? Let's come to the point. Move to a bigger room, a rooftop, or a building with expensive expensive architecture. Take a break from the space where you do your daily work, which is also linked to your current thought patterns. Trying to eat healthier. It is likely that you shop out autopilot at your regular supermarket. Try a new grocery store. You may find it easier to avoid unhealthy food when your brain doesn't automatically know where it is located in the store. अगर तुम कहीं जाते हो और कुछ उल्टा खा बैठते हो, सो इट्स वेरी इजी कि तुम वो शॉप बदल लो. तुम शॉप बदल लो तो जो अननेसेसरी चीज़ें तुम खरीद रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग्स कि ये तुम्हें पता है ये यहाँ है ये यहाँ है, तो वो अपने आप ही स्टॉप हो जाएंगी. When you can't manage to get an entirely new environment, this is the point. When you can't manage to get an entirely new environment, redefine or rearrange your current one. Simple. अगर आप अपना नया इन्वायरमेंट नहीं बना सकते, अब हर इंसान अपने लिए नया प्लेस ऑफ स्टडी तो नहीं ढूंढ सकता ना, तो यू कैन रीडिफाइन और रीअरेंज योर करंट वन. क्रिएट अ सेपरेट स्पेस फॉर वर्क, स्टडी, एक्सरसाइज, एंटरटेनमेंट एंड कुकिंग. द मंत्र आई फाइंड यूजफुल इज वन स्पेस वन यूज. एक जगह पे एक ही काम हो सकता है. एक जगह पे खाना और सोना नहीं हो सकता, एक जगह पे खाना और पढ़ना नहीं हो सकता, एक जगह पे सोना और पढ़ना नहीं हो सकता. Okay, so one space, one use. So this is the whole thing that you will take today. What you will take today from this particular session, one space, one use. Okay, एक जगह का एक ही काम होता है. So if you will do that way, that will not distract you. So please, all of you, write it if you understood this point. One space, one use. Please write it in the comment section if you agree with that. One space, one use. One space, one use. Okay. One space, one use. Use.
When I started my career as an entrepreneur, I would often work from my couch or at the kitchen table. In the evenings, I found it very difficult to stop working. सुन रहे हो? In the evenings, I found it very difficult to stop working. There was no clear division between the end of work time and the beginning of personal time. This thing happens ना, हमें कभी रियलाइज ही नहीं होता कि हमारी पढ़ाई ख़त्म हो गई है, अब हम थोड़ा अपने लिए 2 मिनट दे सकते हैं, है ना? वो चलती रहती है, वो चलती रहती है. वी डोंट गेट अ ब्रेक. वाई? these things happens for with us as well. ऐसा लगता है पूरे दिन ही there is a job which is going morning 5 to late night 10. ऐसा लगता है बस नौकरी ही चल रही है. We don't feel like we are having a time for us. Why? So the things happens with both of us. So when I started my career as an entrepreneur, I would often work from my couch or at the kitchen table. In the evenings, I found it very difficult to stop working. There was no clear division between the end of work time and the beginning of personal time. Was the kitchen table my office or the space where I ate meals? Was the couch where I relaxed or where I sent emails? Everything happened in the same place. तो ये प्रॉब्लम क्या थी? क्योंकि हम किचन में बैठ के काम भी कर रहे हैं और अपने ऑफिस टेबल पे बैठ के खा भी रहे हैं. तो वी हैव नॉट डिजाइंड आवर वन स्पेस फॉर वन थिंग. तो इसीलिए ऐसा हो रहा है कि हम कहीं भी जाएं, वेर एवर वी गो, वी विल कीप डूइंग द सेम थिंग. ठीक है? सो दैट्स वाई वन स्पेस वन यूज. ओके, इसलिए वी विल नॉट फील फ्री एट एनी टाइम अगर हम हर जगह काम करेंगे. आई कैन रिलेट इट वेरी इजीली. ओके, आई कैन रिलेट इट वेरी इजीली. That's why, when I've started teaching on an academy, मैंने लैपटॉप छोड़ के आई बाइड द सिस्टम. क्यों? अ लैपटॉप कैन गो एनीवेयर अराउंड इट, right? But a system cannot move. So ultimately, whenever you have to work, you have to come at the same place, right? That's why I always make sure I can go live from anywhere, any place, but I still make sure that I will go live from my studio room only. Right? I do have my phones. I can go live from anywhere, anytime, but no. One space, one use. Right? Yeah, absolutely. Workstation. Okay. So I was on the point. A few years later, I could finally afford to move to a home with a separate room for my office. Suddenly, work was something that happened in here, and personal life was something that happened out there. It was easier for me to turn off the professional side of my brain when there was a clear dividing line between the work life and the home life. Each room had one primary use. The kitchen was for cooking, the office was for working. Whenever possible, avoid mixing the context of one habit with the another. Whenever possible, avoid mixing the context of one habit with another. When you start mixing the context, you will start mixing the habits, and the easier ones will usually win out. And the easier ones will usually win out. अगर तुम अपनी दो हैबिट्स को मिक्स करोगे तो जो तुम्हें आसान लगता होगा तुम उस डायरेक्शन पे मूव कर जाओगे, और जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा वो तुम्हारा पीछे छूट जाएगा. दिस इज वन रीजन वाई द वर्सैटिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज बोथ अ स्ट्रेंथ एंड अ वीकनेस. है ना, हम बोलते हैं ना, we can do many things, we can do many tasks. This could be a strength and a weakness as well. You can use your phone for all sorts of tasks, which makes it a powerful device. But when you can use your phone to do nearly anything, it becomes hard to associate it with one task. You want to be productive, but you are conditioned to browse social media.
You want to be productive, but you are conditioned to browse social media, check emails, and play video games whenever you open your phone. It's a mishmash of cues. So phone is for one thing. You may be thinking you don't understand. I live in New York City. My apartment is the size of a smartphone. My apartment is the size of a smartphone. I need each room to play multiple roles. Fair enough. If your space is limited, divide your room into activity zones. A chair for reading, a desk for writing, a table for eating. You can do the same with your digital spaces. You can do the same with your digital spaces. I know a writer who uses his computer only for writing, his tablet only for reading, and his phone only for social media and texting. Every habit should have a home. कितना बड़ा लाइन है मतलब I loved it and I got so many things from it. A writer who uses his computer only for writing, his tablet only for reading, and his phone only for social media and texting. If we will define the usage of a one particular thing, that will not distract us. अगर हम उसी मोबाइल से अगर टेक्सटिंग भी करेंगे, सोशल मीडिया भी चलाएंगे और उसी से रीडिंग भी करेंगे, it will not going to help us. Every habit should have a home. If you can manage to stick with this strategy, each context will become associated with a particular habit and mode of thought. Habits thrive under predictable circumstances like these. Focus comes automatically when you start at your work desk. Focus comes automatically when you are sitting at your work desk. Relaxation is easier when you are in a space designed for that purpose. जो स्पेस आपने अपने रिलैक्स के लिए बनाया, अगर आप वहाँ जाके सिर्फ रिलैक्स करोगे तो दैट ओनली इट विल रिलैक्स यू. अगर वहाँ जाके भी पढ़ाई करोगे तो इट विल नॉट रिलैक्स यू. ठीक है. स्लीप कम्स क्विकली व्हेन इट इज द ओनली थिंग दैट हैपन्स इन योर बेडरूम. If you want behaviors that are stable and predictable, you need an environment that is stable and predictable. A stable environment where everything has a place and a purpose is an environment where habits can easily form. So I believe one space, one use. So don't bother about, ma'am, I don't have a big house. You can have sections in your small room. Okay, so one space, one use. Got it? Okay, so this is it for today. I will summarize few of the points that we have read it out. If you want to note it down, if you want to pick any of one of the thing, you just write it down. It will easy for you to follow it. Small changes in context can lead to large changes in behavior over time. Every habit is initiated by a cue. We are more likely to notice cues that stand out. Make the cues of good habits obvious in your environment. Gradually, your habits become associated not with a single trigger, but with the entire context surrounding the behavior. The context becomes the cue. It is easier to build new habits in a new environment because you are not fighting against the old cues. One space, one use. So the take for today is one space, one use. Got it, Vikram? Got it, everyone? ठीक है. तो आपको क्या होगा, यू विल फील रिलैक्स्ड एज वेल. आपको ये भी लगेगा दैट आई एंजॉयड माई डे एज वेल. आपको ये भी लगेगा आई ईट वेल, आई स्लेप्ट वेल. है ना. जो हमारे साथ होता है ना, वी फील इनकम्प्लीट. नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हुई, खाना भी अच्छे से नहीं खाया, कुछ भी, एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट. दैट बॉदर्स यू, दैट मेक्स यू फ्रस्ट्रेट. बट इफ यू विल बी हैविंग वन स्पेस, वन यूज, यू विल फील कंप्लीट. ठीक है. चलो, विल वर्क ऑन दिस. कुछ नहीं करना है. द थिंग्स दैट यू आर डूइंग, उनके साथ साथ ही बस इस थॉट को आप अपने पास रखोगे, सो चीज़ें बहुत इफेक्टिवली होंगी और बहुत इजीली मैनेज होंगी. ठीक है. चलिए गाइस, इट्स गुड टू टॉक विद यू.
Today we are very late, but it's fine to be late. It's 6:30. Okay. So start your day with your way. Okay. आपका कंट्रोल है आपके पास. Right? तो आपको कौन सा रीडिंग और राइटिंग करना है अभी अदिति? आप कौन सा राइटर हो अभी? वाई यू नीड डिफरेंट? हाँ, मैं आपको बोलूँगी. जैसे मैं आई विल सजेस्ट यू दिस थिंग अदिति. जो लोग मोबाइल से पढ़ते हैं और मोबाइल से ही अपना सोशल यूज़ करते हैं, टेलीग्राम और फ़ोन कॉल्स आते हैं, प्लीज़ डोंट लर्न फ्रॉम मोबाइल्स. प्लीज़ 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 स्टॉप यूजिंग मोबाइल्स. थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, गेट द टैब और लैपटॉप और बाय एनी अदर थिंग, लेकिन वन स्पेस वन यूज़. मतलब आपको ये करना पड़ेगा. जिस फ़ोन पे फ़ोन कॉल्स आते हैं, आप उस फ़ोन पे क्लास नहीं ले सकते. गॉट माई पॉइंट? ओके. आप अपने फ़ोन को सिम फ्री बना सकते हो. आप अपने फ़ोन में सिम ही मत डालो. जस्ट यूज़ इट द अदर वे. आप कहोगे मैम हॉटस्पॉट चाहिए या कुछ वाईफाई लगवाओ. दीज आर द थिंग्स दैट विल नॉट हेल्प यू टू बी फोकस्ड ऑन योर वन थिंग. गॉट माई पॉइंट? सो डू दिस थिंग. चलिए, this is it for today. I believe you have learned some of the points and you will make your day productive. Bye. Start your day with full energy, with full josh.